अविनाश जी, आपको लगता है कि इस मूव के बाद जब कंपनीज स्पेक्ट्रम को शेयर कर पाएंगी तो मार्जिन्स पे क्या असर पड़ेगा, टेलीकॉम कंपनीज के बुक्स पे क्या असर पड़ेगा और स्टॉक प्राइसेस में कैसे रिफ्लेक्ट होगा ये? आई थिंक डेफिनेटली ये स्पेक्ट्रम शेयरिंग का जो कल प्रपोजल टीआरआई ने दिया है, मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव है, क्योंकि जिन कंपनीज के पास सरप्लस स्पेक्ट्रम रहेगा उनको थोड़ा सा रेवेन्यू पोटेंशियल इस स्पेक्ट्रम से कमाने को मिलेगा। जो कंपनीज को हाल ही का ऑक्शन में स्पेक्ट्रम ज्यादा नहीं मिला है उनको पॉसिबिलिटी होगी कि इस स्पेक्ट्रम को लेके वो अपनी नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। क्लियरली आई थिंक इसमें भारती एयरटेल, आइडिया, ये जो कंपनीज है इनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर लायन शेयर स्पेक्ट्रम का इनको मिला है। दूसरी बात, मेरे ख्याल से जो भी प्राइसिंग अभी रिलायंस जो करेगा, मेरे ख्याल से आज एजीएम है तो रिलायंस का प्राइसिंग और लॉन्च, ये वो दोनों चीजें आगे टेलीकॉम सेक्टर को काफी इफेक्ट करेंगी। अंदाजा है कि जो प्राइसिंग रिलायंस जो अनाउंस करेगा वो मेरे ख्याल से काफी कॉम्पिटिटिव रहेगा। तो मेरे ख्याल से आने वाले क्वार्टर्स में इस सेक्टर में काफी आपको अनाउंसमेंट्स देखने को मिलेंगे, और क्लियरली प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स काफी चैलेंजिंग रहेंगे। Avinash, let's come back to the rupee depreciation and how much of a factor is it really going to be and a concern going forward from here? Is it going to be a bigger problem? And like Avinnash was talking about that he's advising investors to sit on cash. Would you advise the same, or do you think there are investment opportunities in the equity markets at this point in time, looking at the levels of the market? No, I think clearly the rupee depreciation is obviously going to impact the markets, because whenever sentimentally when the rupee corrects and the rupee weakens significantly, we see the market sentiment taking a hit. Even FIs take a backseat, because in dollar terms they lose out on their fresh investments. But coming back to the investments scenario, I would say that export oriented companies, typically good pharmaceutical companies, IT companies, auto component companies, I think selectively one can start nimbling, maybe allocate about 20 to 25% of your funds, because it's very difficult to actually know where the market would actually bottom out. So I think stick to quality companies and large companies, and we have been advising our clients to actually allocate 20-25% of their funds, probably wait for the markets to take a directional call and then invest the rest. वसीम, आपसे मैं वेदांता